Jai Bharat to all of you. I hope you have been doing well and happy Makar Sankranti to all of you. In fact, happy Pongal in most of the places, happy Bihu. Something or the other is there. It's basically different names, but one festivity. Uh, a lot of results have come, isn't it? And today my focus is group discussions. A lot of business schools are taking group discussions, so it is important that you should know about it as to how to do well. So I would focus on three things as far as group discussion is concerned. The first point would be ये जीडी होता ही क्यों है? Why do group discussions happen? What is the reason? The second success mantra, and trust me, I'm not asking you to really watch my video for a long period of time, which is why I'll give you that success mantra. But yes, there is something, one model is there, which I'm going to really discuss with you. और मुझे लगता है कि आपको बहुत काम आएगा वो मॉडल, और ये मॉडल को बहुत हम अपने स्टूडेंट्स को भी बताते हैं. एंड इफ यू आस्क माय स्टूडेंट्स, दे विल वाउच फॉर इट बिकॉज उसको हर जगह आप लोग यूज कर सकते हैं. सो दैट मॉडल आई एम गोइंग टू टेल. एंड वो आखिरी में नहीं बताएंगे, शुरू में ही बताएंगे. राइट. एंड हाउ टू डू वेल. एंड as far as GDs are concerned, like what do you do inside a GD? A bit of things चाहिए सबको. You require to know about it. So सबसे पहले, first we should discuss 2 minutes on why do they take group discussions at all. Now, if you look at a typical role of a manager, then manager plays three roles. One, morning में हो सकता है कि और you call your all your people who are reporting to you and you are the leader. तो आप मीटिंग बुलाएंगे तो ऑब्वियसली इश्यूज पर डिस्कस होगा. And whatever your boss has said last evening to you, you would discuss and you will plan with your juniors, people who report to you, how to ensure that the project you have got, that is taken care of. अब इसमें क्या होगा? You are the boss and you have to instruct, so you are basically speaking, isn't it? And you are listening to others, whoever is giving you advice, and you have to decide whether the advice is correct or not. आफ्टरनून में हो सकता है कि योर बॉस माइट बी आस्किंग यू टू बी अ पार्ट ऑफ अ टीम विच इज अ टीम ऑफ कलीग्स. यहां पर डायनेमिक्स आर से डिफरेंट. राइट. यहां पर यू आर नॉट द बॉस, but you are also not the junior person. You are not reporting to anyone. So the dynamics is different. यहाँ पर again a team meeting is going to be there, which is like a group discussion. This will be more fiery. This would be more competitive because कोई आपकी बात ऐसे नहीं सुनने वाला because you are the boss. Right. You need logic, you need examples, you need to fight to make up your point. Right. So colleagues are there. Nobody is going to listen like this. So therefore, the dynamics of a GD is different. शाम में पता चला कि you are a part of a team meeting where your boss is essentially taking the meeting. यहाँ पर क्या करना है? You have to listen a lot. You have to be a part of a team, teamwork, listening, suggestions. ये तीनों चीजें ना आपके साथ जीडी में हो सकती है. किसी किसी जीडी में स्पीकर्स वुड बी सो गुड and so dominant that you would play the third part where you might actually have to accept somebody as your boss. It can happen a fish market where all of you are like of similar level, so it will be like really competitive. And if you are a very good speaker, then why not? You might be in the first case where you are actually ensuring that you are leading that particular group. So be ready for all three. Any one of you could be a part of anything, right? It depends on the quality of the colleagues which you get, और उसी पर सारी चीजें डिपेंड करेंगी. तो ये इसीलिए जीडी होता है बिकॉज योर कॉर्पोरेट लाइफ इज all about these kind of meetings. In one day, there are so many meetings are there. So emotionally, you need to be very strong. What do panels really look for? क्या देखते हैं, क्या ढूंढते हैं स्टूडेंट्स में? तो एक तो क्लैरिटी ऑफ थॉट ढूंढते हैं. ये बहुत जरूरी है. वेदर यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर इश्यूज और नॉट. राइट. एनालिटिकल स्किल्स तो देखते ही देखते हैं. लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स, स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंट्स है या नहीं है आपका, दैट ऑल्सो इज लुक्ड एट बाय देम. देन लीडरशिप एंड टीम वर्क. नाउ लीडरशिप का मतलब ये नहीं है दैट ऑलवेज यू हैव टू शाउट और ऑलवेज यू हैव टू प्रूव इट by thought leader, good points, right, logical points,
very nice kind of a point. That is what I call leadership, and everybody understands is leadership. And teamwork is about being a part of the team, ensuring आपको पता रहना चाहिए कब बोलना है, कब चुप हो जाना है, एक पॉइंट को बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है. That's also a part of teamwork, so that बाकी लोगों को टाइम मिल सके. Right? Awareness about issues very important. Knowledge is going to be pretty crucial. So they are looking at knowledge from your side, and they're also looking at emotional intelligence. Emotional intelligence is कैसे समझाएं इसको, एक इनेट अंडरस्टैंडिंग कैसे, ठीक है, किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है बोलने का, तो जब वो बोले तो आप चुप हो जाएं बिकॉज आपने काफी बोल लिया. राइट. इमोशनल इंटेलिजेंस इज अबाउट नॉट मेकिंग फन ऑफ पीपल, नॉट बीइंग घमंडी बेसिकली. राइट. नॉट बीइंग सो अग्रेसिव, ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द इन्विजिलेटर लाइक, थोड़ा उसको भी समझना जरूरी है. इफ इन्विजिलेटर आपको लगे ना कि डजंट लाइक टू मच अग्रेशन, तो आप उसी हिसाब से एडजस्ट कर जाते हैं. कभी कभी उनको चाहिए होता है अग्रेसिव पीपल, राइट, तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं. बट फिश मार्केट तो किसी को भी नहीं चाहिए होता है. बट स्टिल दोज आर सम ऑफ द थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड. वॉट अबाउट, अब चले आते हैं सक्सेस मंत्रा. आई थिंक विथ माई स्टूडेंट्स आई हैव यूज दिस वेरी वेरी सक्सेसफुली, which is the model of PESTEL. So PESTEL, many of you would have studied during your BBA days. I think so. So P stands for politics, E stands for economics, S stands for so society basically, T stands for technology, L stands for legal, and E stands for ecology. बट पेस्टल में हम एक आध चीज और जोड़ देते हैं. फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी. सो समटाइम्स साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट यू कैन ब्रिंग इन. आई ऑल्सो एड माइथोलॉजी इन दैट. तो कभी कभी स्पेशली टॉपिक्स दैट आर what we call out of context topics or abstract kind of a topics, उन सब में mythological, psychological, those kind of issues also work. So this has been my success mantra during my group discussion days, and it has worked very very well for my students. Right. So I think this will work for you also. Right. So let's take up, how do you really prepare कैसे करेंगे, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, सो दैट यूल बी. और एक एग्जाम्पल भी आपको हम देंगे कि हाउ टू यूटिलाइज दिस पेस्टल, बट 2 मिनट में. सो हाउ डू यू प्रिपेयर, यू हैव टू बी updated on this current affairs. So I'm sure you've been reading, but you can always go to any if you go to IMS website, and if you're an IMS student, there are a lot of classes. I also take up a lot of classes physically in Patna, but online also, I will try and put some of the important areas. For example, a bit of understanding, I was thinking about monetary and fiscal policy, and on budget, definitely I'm going to come. But IMS का भी अपना बहुत अच्छा classes चलता है, knowledge sessions and all that, so that you can attend, and so in other coaching institutions also. Everybody wants to do well, right, and to gain the respect of the students. So सबका कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा रहता है. So wherever you are, you can really manage that. But if you are in near IMS Center, I think you should go there. Especially in Patna, you can always come and physically attend. We are doing 6-7 days a week, right? You need to also understand key topics. So key topics are going to be economics, business, because finally you are going to be a business manager. So as much as data about इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, उसके लिए एक बहुत अच्छा साइट है, IBEF, www.ibef.org. आई थिंक इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइट. गो इट इज फैंटास्टिक. राइट. और थोड़ा मुझे थैंक यू भी कर दीजिएगा. आपसे थैंक यू तो हम मांगते नहीं है, बट इस साइट के लिए तो आपसे पक्का थैंक यू मांगेंगे. आप जाकर देखिए. आई थिंक यू विल एंजॉय द काइंड ऑफ डेटा इट हैज. राइट. देन practice, lot of practice and stuff like that. I think that will really help you out. In GDs, the more you practice, the better it is. Physical जितना कर सकते हैं practice कीजिए. Online भी आजकल होता ही है, but still I think many of the GDs have become mostly physical exercises. So if you can, please do that. Right. So how do you do GDs? Like किन किन चीजों का ख्याल रखते हैं हम लोग GDs में? People say that if you initiate, it's good. लेकिन सब लोग तो इनिशिएट नहीं कर सकते हैं. बट इफ यू कैन इनिशिएट, आई थिंक दैट विल बी वेरी नाइस. राइट. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अप, पिछली साल आया था, IITs में आया था, और कुछ कुछ IIMs में भी आया था, बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स. एंड ये आया. फिर एक और टॉपिक आया था. बेनिफिट ऑफ स्पोर्ट्स वाज बिकॉज इंडिया इज रियली वाइंग फॉर 2026 और 32 ओलंपिक्स, मुझे याद नहीं आ रहा है,
but we are trying to be a country who would organize Olympics. And I think high time India को करना भी चाहिए. We are a great nation, and I think it's high time we should do it. So वहाँ उस टॉपिक के चलते ना sports earns benefits. Now, if I have to discuss this topic, right? और पेस्टल को अगर मुझे यूज करना है तो हाउ डू आई यूज पेस्टल? सबसे पहले तो आई वुड लुक एट पॉलिटिक्स. Now, why would I look politics? Because ultimately the decision, because uh, arranging Olympics is a very big economic exercise and it's a political exercise, isn't it? उससे भी बड़ा political exercise है. The prime ministers of the country are involved in that. That is why for India to think about Olympics is a very big thing. We've never thought about Olympics earlier, right? And the world never thought that India can actually host Olympics. But now the world thinks that we have that kind of economic strength, infrastructure, power, that we can execute very big projects without too much of a issue. And they have the confidence on our money and economy and the love for sports. So we are growing, we are making our mark in this world. So therefore, politically, I think it is going to be very, very beneficial in a way for any political party who would try to arrange Olympics. And I think politicians always try to gain brownie points. And this could be the reason why, uh, one would like to, you know, kind of conduct Olympics, the entire thing here in this country. Let's go to economics. I think you, as a B school aspirant, should definitely think everything about business and economics. कई बार ना लोग पॉलिटिक्स और सोसाइटी और इन सब चीजों में फंस जाते हैं. मेंशन करना चाहिए, बट मेरे हिसाब से 80% ऑफ योर डिस्कशन शुड बी अबाउट बिजनेस and economy. So you can talk about benefits of sports in terms of, let's take up money. So how do we talk about? So how many $1 billion IPL has become, isn't it? Then HIL is doing well, Hockey League, thanks to Odisha government and the previous Chief Minister, Mr. Naveen Patnaik. He was someone I really admired. I felt that he was a very, very nice Chief Minister, Prime Minister material for that matter. But anyway, Hockey League is there and it is spending money. Then you have a Kabaddi League, which was one of the first ones to really come. Football League is there. So look at the kind of money which is involved. Talk about it. Sports management is happening. A lot of MBA people are getting into sports, right? So in my view, instead of politics and other aspects, if your discussion and if you talk a lot about from business angle, you would be appreciated more and faculties would look at you more positively rather than fighting about which party is doing what, isn't it? Tech in sports is like crazy. It is being used, and you know how technology is changing the entire thing. In fact, esports is all about tech. Today I am in Mysuru. I had come for a lecture, and along with me, one of the person was I forgotten his name, Mr. Bhansali. He is, I think, the CEO and the founder of esports business. Right, amazing the way, and millions of people are following esports. So look at the kind of changes which are happening in country. Can you reflect that in a group discussion? I think that is going to be very important. Business and business. Even a political issue, think from business, economy, data, money point of view, because that is what you are actually going for. So I hope that is clear to you. What about legalities and society in this? I think for society also sports really matters, right? Health, mental health, physical, both physical and mental health. And as we develop, I think sports is going to play a very important role for each one of us. And there is a happiness that sports spreads, isn't it? A lot of us are, for example, Barcelona won against Real Madrid, and if you're one of the Barca fans, then you're with me. But if you are like my son and wife, Real Madrid fans, then you would not be so happy about it. But then you fight on sports, you become happy on sports, you get angry on sports. All human emotions come out on sports, and so does cricket and Gukesh winning the chess championship. So many things are there. Sports is good for mental health, isn't it? It really, really makes you
very excited for such a short period of time, and you forget all the ills of your life, whatever it is, if it is at all. So what are the things you have to keep in mind? Sometimes कुछ लोग ना बोल नहीं पाते ठीक से, उनके लिए जिनकी इंग्लिश कमजोर है या फिर कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा कमजोर है, उनके लिए आप क्या कीजिए ना, छोटा छोटा पॉइंट्स लिखिए, एक या दो पॉइंट, तीन पॉइंट, और एक लाइन का, दो पॉइंट का। और जब भी कोई बोल रहा हो तो आप देखेंगे दैट इन अ ग्रुप डिस्कशन जो आवाज है ना, डिप्स एंड अप्स होता है। तो जैसे किसी का आवाज डिप हो ना, आप अपनी आवाज थोड़ी तेज करके, फॉर एग्जाम्पल डियर फ्रेंड्स, ऐसे करके थोड़ा ऊपर करके 2-3 सेकेंड, सो दैट द रेस्ट ऑफ द पीपल विल स्टॉप एंड देन यू कैन स्पीक योर पॉइंट, राइट। या फिर जो लोग थोड़े डोसाइल हैं या अग्रेसिव नहीं है, बोलने में उनको दिक्कत होता है, तो रेज योर वॉइस for 2 seconds, 3 seconds, so that people get stunned a bit, and then you can bring it down and then you make your point. It is important for speakers who do not have a great voice. जैसे मेरा वॉइस भी इतना अच्छा नहीं है, there are people who have very loud and baritone voice, very good voice. वो बोलेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा, तो सुनना ही पड़ेगा। लेकिन अब हम अपनी बात कैसे बोले, राइट? तो what I do in those situations when you have very good speakers and they are fighting with you, that I raise my voice to a level and then it comes down a bit. So then people get stunned. So you'll have to practice, राइट? ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। सो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, लिसनिंग एक्टिवली इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिव लिसनिंग का मतलब हुआ कि सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, एक्टिवली सुन रहे हैं, उसकी बातों को समझ भी रहे हैं, और जब जरूरत पड़े तो उसके पॉइंट्स को हम लोग रिबट कर सकते हैं, राइट। बट रिबट करना शुड नॉट बी द पर्पस। बहुत व्हाट डू यू से, बहुत पोलाइटली रिबट करना चाहिए, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, और इन अ वेरी नाइस मैनर, और पर्सनलाइज होके नहीं करना चाहिए। यू कैन से आई बेग टू डिफर, इससे अच्छा रिबट करने का तरीका नहीं हो सकता है, राइट। रादर जैसे यू आर रॉन्ग, या फिर ऐसे नहीं बोलते कि आई वुड लाइक टू काउंटर यू, ये सब चीजें नहीं। आई बेग टू डिफर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बाद में अगर समरी करने की जरूरत पड़े तो समराइज भी कर सकते हैं, तभी लिसनिंग एक्टिविटी, लिसनिंग एक्टिवली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू हैव टू कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ भी जैसे ऐसा नहीं बोल देना चाहिए जिसका कोई मतलब ना हो, उससे अच्छा चुप रहे और बाद में जाकर के भी समराइज, इजंट इट। एंड यू हैव टू ऑल्सो स्टे काम एंड कंपोज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपटीशन में अगर आप थोड़ा नर्वस हो गए, पागल हो गए, एंड इफ यू आर नॉट स्पीकिंग, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, तो इट्स नॉट गुड, राइट। और कोशिश करनी चाहिए वीक स्पीकर्स को शुरुआत में ही आ जाए, विद इन 2 to 3 minutes, 2 minutes भी नहीं, विद इन अ मिनट ऑफ अ जीडी स्टार्टिंग, यू शुड बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। बिकॉज 10 के ग्रुप में एक छोटा सा मिनी ग्रुप बन जाता है, सब लोग नर्वस होते हैं, तो एक जैसे ही बोला, फिर दूसरा वाला एक दूसरे को, द सेकंड पर्सन विल स्टार्ट स्पीकिंग टू द फर्स्ट पर्सन, और फिर थर्ड स्पीकर विल स्पीक टू फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। तो आप देखिए कि 10 के ग्रुप में 3-4 लोगों का एक मिनी ग्रुप बन जाता है। इफ यू आर अ पार्ट ऑफ दैट मिनी ग्रुप, पीपल विल स्पीक टू यू ओनली, right? And you will feel at ease, and then I think things would be good. I think this is the purpose of a GD. ऐसा नहीं होता ये जीडी में कोई रिजेक्ट हो जाता है, राइट। बट अगर आप 1100 किलोमीटर गए हैं, लेट्स टेक अप फ्रॉम पटना टू दिल्ली, और टू कोलकाता अराउंड 500-600, और फ्रॉम चेन्नई टू बैंगलोर, और टू फ्रॉम पंजाब टू दिल्ली, एनीवेयर इन द कंट्री टू अ मेन प्लेस, एंड इतनी दूर गए आप और चुप होकर के आ जाएं, आई डोंट थिंक दैट स्पीक्स वेरी नाइसली अबाउट यू, इजंट इट? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट यू शुड स्पीक एंड स्पीक आउट। इन्विजिलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको बुलवाएं। अगर कोई दूसरा हल्ला कर रहा है, फिश मार्केट कर रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पोलाइटली चुप कराएं, टेक अ लीडरशिप रोल, और मैनेज इस तरह से करें असर्टिवली, नॉट बाय बीइंग एंग्री। ऐसा नहीं कि चेहरा वेहरा पूरा लाल कर लिया एंड देन यू आर सेइंग थिंग्स टू देम, नो। दैट इज द टेस्ट ऑफ योर लीडरशिप क्वालिटी, राइट? आई होप आई हैव मेड अ मीनिंगफुल difference to your, already you are very well informed, lot of faculties are talking to you, right? So there will be some issues which would be, or points which would be common, and there would be few things which is unique to me because of my experience and my upbringing and my life, right? So that is what is the entire purpose. My good wishes and blessings to you. I'm coming with more interview questions. दो दो क्लास, 3 क्लास तो मैंने इंटरव्यू का ले लिया, अभी 3 क्लास और है अलग अलग एरियाज पर. So that also I am making. In fact, tonight also, tonight only I have planned to make those videos. So my good wishes and blessings to all of you. And yes, do comment.
and do ask whatever queries you have related to anything. I would be more than happy and willing. And sometimes हम reply नहीं करते हैं because of nothing else. I love to reply, but कभी कभी travel कर रहे हैं, कभी class बहुत ज़्यादा हो गया, so I'm not able to do it. But slowly and steadily, I do reply to all of you. Thank you and Jai Hind.